सेंटेंसेस कैसे भी हो, आपको इंग्लिश बोलनी है। आज की इस वीडियो में फेमस कॉमेडियन मिर्दुल के सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। प्लीज वॉच टिल द एंड। हम दोनों ने कहा ही अलग अलग रंग की स्कर्ट पहन रखी है। Why are both of you wearing different colored skirts? Why are both of you wearing different colored skirts? मंडे है ना आज? It's Monday, isn't it? It's Monday, isn't it? लाल रंग की स्कर्ट पहनी जावे। Red colored skirt should be worn. Red colored skirt should be worn. तू कहाँ पहन रखी है? ब्लैक एंड व्हाइट। What are you wearing? Black and white. What are you wearing? Black and white. सॉरी मैडम। Sorry, madam. Sorry, madam. सॉरी करवा लो बस। Just make them say sorry. Just make them say sorry. तू यूं कहाँ ड्रामे लिए डोल रहा? What kind of drama do you have? What kind of drama do you have? मैडम जी मेरे सिर में दर्द हो रहा। Madam, I have a headache. Madam, I have a headache. सो ठीक हो जावे। Does this fix it? Does this fix it? हाँ। Yes. और तेरा यू कहाँ सिस्टम है? And what is your system? And what is your system? मैडम जी मेरी जो ना रैट बह रही है। Madam, my nose is running. Madam, my nose is running. या चक्कर में यू बेर बेर निकालना पड़े। In this matter, one has to take out the handkerchief again and again. In this matter, one has to take out the handkerchief again and again. या हमारे मैंने यू यही टांग दिया। So I hung it here, on my shirt. So I hung it here, on my shirt. यू कहाँ लगा रखा माथे पे? And what is this, on your forehead? And what is this, on your forehead? मैडम जी मेरी जो ना नजर बहुत ज्यादा लगे। Madam G, I am very much affected by the evil eye. Madam G, I am very much affected by the evil eye. ये सारे मोर नजर लगा दे। All of them has evil eye on me. All of them has evil eye on me. फिर मेरा पढ़ाई मन न लगता। Then I don't feel like studying. Then I don't feel like studying. या हमारा मैंने काला टीका लगा रखा। That's why I have put a black mark on my forehead. That's why I have put a black mark on my forehead. सारी नजर तो जही लगेंगी। इतना भी मलूक ना है तू। All eyes will be on you. You are not that much of a sweet. All eyes will be on you. You are not that much of a sweet. स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको नेक्स्ट कौन से कॉमेडियन की वीडियो चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। नाउ कंटिन्यू। और तू यू कैसा माथा फूटा पड़ा है? And what kind of injury do you have on your forehead? And what kind of injury do you have on your forehead? मैडम जी कल रात में सो रहा। Madam, I was sleeping last night. Madam, I was sleeping last night. एक मच्छर आएंगे तो घूमता घूमता। Then a mosquito came roaming from there. Then a mosquito came roaming from there. मेरे डंक मार दी, मेरा माथा फोड़ दिया वाने। He stung me and injured my head. He stung me and injured my head. ऐसा कैसा डंक मार दिया भाई? How did it sting? How did it sting? मैडम जी तो मैंने पता। Madam,
Don't you know? Madam, don't you know? खुरपा जैसे डंक ले रखे हैं आजकल मच्छरन ने। These days mosquitoes have sting like horse. These days mosquitoes have sting like horse. अच्छा, तो ये खास मच्छर डायनासोर प्रजाति के तेरे ही घर में। Well, this special type of dinosaur species of mosquitoes is in your house only. Well, this special type of dinosaur species of mosquitoes is in your house only. हमारे घर में तो ना है, अलग ही बात लेके आवे सदा। Our house don't have it. He always comes with something different. Our house don't have it. He always comes with something different. हाँ बेटा, तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ा है। Yes, son. Do you study in our school? Yes, son. Do you study in our school? आज मैडम मैं आपके स्कूल आई हूँ। Yes, madam. Yes, madam. जुताई किसकी है? मैडम जी Whose tie is this? Whose tie is this? पिछले स्कूल की है। It is from the previous school. It is from the previous school. तब पिछले स्कूल में ही पढ़ने चला जाए कर, यहाँ क्या करने आवे? So you should go to study in your previous school. What do you come here to do? So you should go to study in your previous school. What do you come here to do? लो जी, एक इन्हें देख लो भाई। Come on, take a look at this. Come on, take a look at this. 10वीं क्लास में पढ़े हुए ब्याह की उम्र होगी। He is in class 10th and has reached the age of marriage. He is in class 10th and has reached the age of marriage. मुझे ब्याह तो होगा मेरा। Madam, I am married. Madam, I am married. मेरे बालक भी आई स्कूल में पढ़ रहे हैं। And my children are also studying in the same school. And my children are also studying in the same school. दादाजी, माफ कर दो मुझे, तुमसे कोई न जीत पाएगा। Grandpa, please forgive me. No one will be able to win against you. Grandpa, please forgive me. No one will be able to win against you. स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कीप प्रैक्टिस।